Students, hope you all have revised all the formulas, huh? So kindly remember the formulas properly, students. Okay. One who gets the answer, please give me a proper reason for it. You can raise your hand, students, okay? And these are questions you should be able to tackle it properly, students, without my help. Today we'll be completing with this chapter. So PU, who texted right now? You texted or somebody else texted? So it was me only who tested through my mother's phone. But your text was sounding that as if you are mom. This is something not good, huh, PU? You should have said it, sir, I'm PU. I need to enter inside. The way you texted it seems like that a parent is texting it. And I'm not letting somebody to enter inside. It looks in that manner. No, sir. What you always try to do it. This is your pattern of doing it. This Sorry, is sir. not, I never. And already when I saw it, you were there inside, you were speaking. I said, then who's this other person? I was thinking that there are two. I mean, somebody entered into your name or what exactly? I was getting confused because there are lots of people who enter with false also ID. Are you getting it? Are you getting it? Yes, sir. I'm That, sorry, sir. that was the reason. Otherwise, I had no problems. Why should I make you away from the lectures? You know, you are a good student. You answer. Now, see, if I ask you a question, you'll be answering. Shall you give me the answer for the second one, PU fast? Just now you'll answer. See, follow. PU fast. Answer. Sir, I Reason. got the answer is NA. Sorry, NB is greater than NB. NA, sorry. हाँ. Option C. क्या बात है यार, ये तो सही आंसर है. कैसे आया? Sir, Na is mg minus force centripetal, that is mv square upon Ra, and Nb will be mg minus mv square upon Rb. So, so sir, then we know that n of b will be greater than n of a. कैसे कैसे? कुछ भी. How is it possible? PU, how is it possible? दोनों का तो फॉर्मूला सेम ही आ रहा है ना, देखो ना. माइनस एन दोनों में आ रहा है. mg माइनस mv स्क्वायर बाय r. सर जिसका रेडियस बड़ा है उसका कम होगा ना. उसका इक्वल टू होना चाहिए. हाँ हाँ, तो जिसका रेडियस बड़ा है वो कम होना चाहिए ना. तो एन भी कम होना चाहिए ना. वो एन भी ज्यादा बता रही है. यस इजार. हाँ सर. सर हम लोग देखे तो पहली बात ये दोनों भी सेम फेज ऑफ मोशन में है. हाँ, और फिर यहाँ पे n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर लगाए गए. तो फिर
बाकी सारी चीजें तो सेम हो जाएगी न्यूमरेटर की, फिर सिर्फ आर को देखें तो मतलब NA is greater than NB. अच्छा, did you get it? What did Rizal say? Yes, sir. R Hmm. of B is greater than RA. Oh, he's saying it N of A is greater than N of B. He said it. Option B is saying it. You saying it. Option C. Yo, Yes, good sir. morning. Good morning. You saw the answer behind, na? No, sir. No, sir. What you? Yes, Neha. What about you, Neha? Come on, Daksh. What about you? Neha. What about you? Other students? Anyone who wants to answer? Anita. Neha, can you answer? Okay. Neha is not feeling fine. She's having throat pain. Everybody's getting affected. Okay, students, now please pay attention. Izar, are you there? Yes, sir. The answer is C itself, not B. Please pay attention now, students. How to go about with this? How to think? Izar, तूने इतना सोचा तो तूने ऐसा क्यों किया यार? Your thought process was absolutely correct. लेकिन थोड़ा सा mathematically you should have thought it. You would have got the answer. Students, let us speak about the diagram. I'm speaking about question number second, students. Okay. Students, when you look at the question number second, it's given to you is, if you look at the diagram, students, they've given to you two convex bridge, students. Okay, one which has a smaller curvature, and the other one is having a bigger curvature, students. Okay, both the bodies are at same position above the ground level. We can consider. Okay, so there is an object over here. There's an object over here also. Now, if you see at the radius, so this radius is greater as compared to this. इसका center हुआ. So now if I say this is A and this is B, please pay attention for the formulas also, which we all said it absolutely correct. Both the students gave a correct relation, but thoda sa math says, my students. If I say this is the center of the first convex bridge and this is the center of the second convex bridge, what are the forces acting? You'll see sir, mg is acting in the downward direction, and over here will be the normal reaction force. यहाँ पे भी mg is going to act in the downward direction, and over here will be the normal reaction force. When you look at the normal reaction force, students, is always directed normally passing the center of gravity and perpendicular to the surface, students. Now, when you see over here, when you read the question, they've made it very clear that the car are going with constant speed. Students, दोनों car का speed same है. यानी दोनों का speed v है throughout, students. Speed is v in both the cases, students. ये ध्यान में रखना. Now over here also the car is moving in the downward direction. Over here also the car is moving in the downward direction. So of course this part is greater. So over here when I run NB is greater than mg. So the difference of the two forces, sorry, Na. Okay. Sorry, not mg. It's not Na. It will be mg is greater than Na because the motion is in the downward direction, students. Since motion is in the downward direction, which force will be greater?
then mg will be greater, students. ये ध्यान में रखना. So now what I'll do, I can say that mg is greater than normal reaction force, students, Na. तो तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे? You'll say, sir, it's mg minus Na will be equal to mv square upon radius of A. That is, the resultant of the two will give me the centripetal force. मुझे normal reaction force का formula चाहिए, तो what is Na? mg minus mv square upon radius of A. तो वैसे ही identically when you look over here also the body is coming in the downward direction. तो यहाँ पे भी तुम्हारा mg is greater than normal reaction force at B. तो यहाँ पे भी equation क्या होगा? Exactly same. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो what is normal reaction B? mg minus mv square upon r of B. क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Now when you look at the two formulas, students, ध्यान से सुनना. Both these particular objects are identical, students. तो कहने से दोनों का weight same है, तो mg दोनों केस में same है. Agreed. Let us assume a particular value, students. Let us take this as 10. Let us take this as 10. Let me take the mass and the velocity to be 1. Okay, mv square. यानी see both of them are going with same velocity. दोनों का speed भी same है. तो इसको मैं 1 लेता हूँ, इसको भी मैं 1 लेता हूँ. Mass is same and velocity is also same. But can I say radius of A? Radius of A is less than radius of B. Agreed. Let me take this as value half and let me take this as value 4. Now can you get an answer? What is 10 minus half? 9.5. What is 10 minus 0.25? 9.75. Can you tell me which reaction force is greater? Which reaction force? NB. So NB is greater than Na. And very important, students, जिसका रेडियस कम होगा, students, अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो ये फ्रैक्शन क्यों जाएगा? बढ़ जाएगा. ये पूरा रेशियो बढ़ जाएगा. अगर ये बढ़ गया तो डिफरेंस तुम्हारा कम हो जाएगा. और अगर ये रेडियस ज्यादा है तो पूरा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा. अगर फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा तो डिफरेंस तुम्हारा बढ़ेगा. और तुम्हें डिफरेंस के बारे में पूछा है ना? Have you understood now, Rizar? हाँ सर, जब भी समझ गया था. हाँ, तो यानी तू सही बोल रहा था. mg सेम है, तूने ये बोला न्यूमरेटर भी सेम है. आर और आरबी के बारे में इतना तक तू बोल दिया था, सब कुछ तो बोला था, लेकिन उस दिन थोड़ा सा ध्यान दे के तूने नहीं बोला था. अगर और थोड़ा ध्यान दे तो वुड हैव गॉट आंसर. ओके, हमको देखना चाहिए तो मेरा फोन क्या करती है इस टाइम में. ये who's this? Who's this? Somebody's mom, she's getting angry. Somebody's mom is getting angry. Who was that? Somebody's parent was there. What, students? नहीं सर. नहीं, किसी के पेरेंट था. मैंने सुना. मेरे फोन के साथ में क्या कर रही है? Fine. Can I erase the students? इसको मैं erase कर दूं, students? Yes, sir. Okay. Now come on, Anahita. Your partner Neha is not answering. Come on, answer now. Please solve fourth and fifth one. Third one we have done it, students. Okay. Third one we did it, isn't it, students? First and third. Yes, we did it. Okay, and I made it very clearly, students. Velocity being a vector quantity, तो उसका direction change हो रहा था, तो velocity constant नहीं होगा. Motion is accelerated, so acceleration is also not constant in that case. But kinetic energy being a scalar quantity, so speed remaining constant, therefore half mv square remains constant. And since force and velocity are mutually perpendicular to each other at every instant, so what exactly the path is going to be circular. You, some parent was speaking na in between. You? No, sir. You are laughing. Yes, Neha said it. Yes, sir. Some parent was speaking in between. Neha is very good girl. She will speak out the fact. Some people were shouting to somebody. Okay.
पीयू है, पीयू झूठ भी बोलती है। वेरी गुड, मामा को बोलना चाहिए। Students, can I erase Sir, this? accidentally the mic got on. I'm sorry. Nothing it was, sir. So it was your mic. Yes, sir, but Okay, fine. Can I erase this, students? इसको erase कर दो. yes, sir. Yes, come on now. Fourth and fifth, anyone? Aisha, why you late? Aisha, why are you late? Aisha, why are you late? This is what it is. Yes, anybody should for the fourth one, please fast. Tell me. सर जितना क्या उतना बोलूं बस। नहीं, मुझे आंसर चाहिए सर, पूरा आंसर चाहिए. अच्छा Come on, anybody else? Anybody else? Anita, come on, answer. Shali, you is not answering. Soham, what about you? Swam, what about you? Taksh, what about you? that's all right. Valentino, Ruthi. And see, students, if you are able to crack it, you are doing GE questions. Okay, shall I solve it for you all students? Fourth one. Students, the question is, a particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r. So there's a particle, students, of mass m, okay, and it's moving with a constant radius r in a circular path.
The radius is constant, student. Okay. This is the center of the circular path, students. Such that its centripetal acceleration is varying with time. And students, the given the centripetal acceleration is always directed towards the center, so acceleration centripetal, so called as the acceleration radial, and it is a function of time they've given to you, and they've given in terms of k square r t square, where k is a constant. I gotta get k is a constant, student. Okay. The power delivered to the particle by force acting on it. Students, they need to find out the power delivered when force is acting onto it. So I need to find out the expression for power. This is question mark. Now how do you go about with it? इज़हार तूने क्या किया बता मुझे, कहाँ तक किया, कैसे किया? सर पहले तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ना mv स्क्वायर नहीं आएगा, v स्क्वायर बार आएगा ना, फोर्स थोड़ी है, एक्सेलरेशन बोल रहा है ना, हाँ हाँ तो v स्क्वायर बाय r आएगा सर। हाँ। फिर उसके बाद में उससे v स्क्वायर निकल जाएगा, v निकल जाएगा krt, एब्सोल्युटली करेक्ट। और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन टेंजेंशियल निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएट करेगा वेलोसिटी को तभी हाँ आएगा ना। डिफरेंशिएट करके। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। पावर का फॉर्मूला बता ना, व्हाट आर द फॉर्मूलास इज व्हाट आर द फॉर्मूलास ऑफ पावर? पावर के वर्क डन अपॉन टाइम। और देख, वर्क डन अपॉन टाइम है ना, कैन आई से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डॉट प्रोडक्ट है। व्हाट इज Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? V. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, यानी इज़हार तेरे को यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फोर्स यानी ये भी क्या, एफ वी कॉस थीटा, ये भी डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। ना इफ आई हैपन टू गो विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी, अगर यही पावर को मुझे पोटेंशियल एनर्जी में लिखना है तो व्हाट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो कहने से पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू mgh अपॉन t। ये तुम्हारा एनर्जी के हिसाब से चला है। So students, these are the formulas of power we consider. So I need to go for force. Now see, Izzard has really have a thought process is absolutely correct. He's going exactly in a very correct conceptual way of approach. तो तुम्हारा acceleration centripetal ही है, acceleration centripetal का formula भी क्या है? It's what exactly? It's v square by r. Agreed? Yes, So now if I happen to go for the formula, so what exactly I'm getting the formula for v square? V square is equal to k square, students. R square t square. Therefore, what is v? K r t taking square root on both sides. Agreed? मुझे चाहिए पावर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, cos of 0 will be 1. Let us say f v cos theta, f v cos theta, and cos of 0 is 1. So what's the formula for power? Force into velocity. Force को कैसे लिखूंगा? Mass into acceleration I'll consider. Agreed? So now I've got velocity. To get acceleration, can I differentiate both the sides with respect to time? Differentiate velocity with respect to time. So differentiating k r t by dt, यानी हम calculus का यूज करते हैं अब यहाँ पे। k क्या है सर? कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड स्टूडेंट्स। यहाँ पे डज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ चेंजेस ऑल द टाइम? नहीं सर, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? dt and dt will get cancelled. So what exactly your dv by dt is simply called as acceleration. Now what exactly force will be equal to? Mass into acceleration. Is that clear? So instead of acceleration, can I put m into k into r? Yes. तो f के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? f के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? It's m into k into r. और v की जगह पे what am I going to write down? What exactly should I write down in terms of v? K into r into t. So what's my final answer? M into k K square square R square r. T. Are you getting this? क्या ये clear हुआ Yes. student? Yes, sir.
Okay. Saksh, is it clear with you? Yes. Can I erase it? Students, can I erase it? Just a Yes, minute. sir. Sir, I said just a minute. I heard yes, sir. Yeah. Oh my God. I heard yes, sir, my dear. क्या No कर रहे हो? problem, sir. I will Ready? check the तुम recording. डरा रहे हो मुझे? I said, I but like no the problem. sir. people were speaking. क्या हो गया? दोनों लोग एक साथ बोल रहे थे. Sorry, sir. ओवरलैप हो गया. Doesn't matter. यूं तो तुम मेरे को डरा दिया. मैं सुबह सुबह एक तो नींद में हूँ, पूरा नींद में हूँ, तो बोले कि तुम्हें सो जाऊंगा, तो मुझे उठा दिया. जागो सर, जागो. I'm sorry. किसी को डराते नहीं ऐसे. मम्मा को कंप्लेन कर दूंगा मैं, तुम्हारी मम्मा को कंप्लेन करूंगा मैं कि सर सो रहे थे और सर को उठा दिया पीओ ने. So you can erase it. थैंक यू. यू थैंक्स अ लॉट. Okay. Again, then we'll give the answer of the fifth one. Students, next one. Anyone? A small block is shot into each of the four tracks as shown below. Each of the track rises to the same height. The speed with which the block enters the track is also same. At the highest point of the track, the normal reaction is maximum is. Yes, anybody? Somebody. See one thing, students. Things are already explained to you. ये सब कुछ सिखाया हुआ है, students. But still you're not able to connect it. I don't know for what reason. Shall I do it for your students? सर एक मिनट.
Yes, Neha, you should unmute yourself. Neha, try to unmute. Absolutely correct. You're going on a correct track. सर इसमें हम लोग फोर्स को बैलेंस करके कर सकते हैं क्या? लाइक Of course, I have to go for the forces in that case. लेकिन कौन सा force को balance क्योंकि कर रहा है? क्योंकि जब अगर टॉप पे आएगा तो लाइक वो जो नीचे फोर्स आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल करेगा। Yes, तो वो absolutely. एन प्लस एम जी होगा ना, क्योंकि नॉर्मल तो मैक्सिमम किस में होना है वो देखना है, बट सेम ब्लॉक है तो एम जी वही होगा। तो नॉर्मल तब आएगा, लाइक मैक्सिमम तब आएगा जब रेडियस कम होगा। So Very good. inverse relationship. हाँ, तो लाइक ए वाला होगा शायद। Yes, absolutely correct. Yes, sir. Even the radius is the smallest in the first option. Yeah, absolutely correct. अब देखो students, यहाँ पे भी तुम्हें करना क्या है? First of all, what exactly the difference was of the previous question, students? Previous question जो भी मैंने बताया था, please everybody listen carefully. वहाँ पे तो सोचो कि ब्लॉक बाहर की तरफ था. Agreed? अभी जो क्वेश्चन दिया है, that is the block is it's a, if you look at the first diagram has but the block is on the inner side. It's on the inner side, students. ये ऐसा वाला diagram दिया उन्होंने. It's going on a flat surface and then it's going in this manner. Okay, so the velocity of the block is same in all the cases. Now, if you carefully look at all the diagrams, students, look at the first one, look at the second one, look at the third one, look at the fourth one. If you see over here, सबसे smallest radius इसका है. Comparison if you consider. So first you have to keep in mind that the radius of the first track is always smallest. Second is mass of the block is same in all the cases. The velocity with which the block is going to move forward is same in all the cases. बस हमें तुम्हें forces लेना है. अभी यहाँ पे थिंक हो गया तो ब्लॉक इज ऑन द इनर साइड स्टूडेंट्स. तो देखो इसका mg किस तरफ जाएगा सर? mg तो नीचे की तरफ जाएगा, डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सर वो भी नीचे की तरफ जा रहा है. दो फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है भाई, ये तो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा. अगर दो फोर्सेस नीचे की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट गिरेगा. इट्स गोइंग टू फॉल फ्री फॉल. लेकिन इट हैज सम वेलोसिटी एट दैट मोमेंट एंड दैट इज वी. एग्रीड? दैट मींस देयर इज सम फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू बैलेंस इट, which is equal in magnitude and opposite in direction because the path is circular to centripetal force. तो हम उसको कौन सा फोर्स लेते हैं? इमेजिनरी pseudo force हम assume करते हैं, और वो है centrifugal, which is equal in magnitude and opposite in direction to centripetal force. So now if I happen to consider, can I say my equation n plus mg is equal to force of centrifugal, which is actually centripetal, equal in magnitude opposite in direction. तो n का फॉर्मूला क्या होगा? So force of centripetal will be mv square upon r minus mg. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. क्या ये इक्वेशन सबको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? दिस इज व्हाट द नॉर्मल एक्शन फोर्स. एंड स्टूडेंट्स दिस फॉर्मूला विल होल्ड ट्रू ओवर हियर आल्सो, क्योंकि ब्लॉक यहाँ पे भी आएगा तो यही फॉर्मूला होगा. यहाँ पे भी आएगा यही फॉर्मूला होगा, यहाँ पे भी आएगा यही फॉर्मूला होगा. सारों में फॉर्मूलास विल बी द सेम. समझ में आ रहा है? लेकिन कहाँ पे सबसे कम रेडियस है सर? इसमें अगर ये आर की मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, अगर ये वैल्यू कम होती है, if denominator decreases, can I say the overall fraction will increase? हाँ या ना? हाँ सर. तो डिफरेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. डिफरेंस बढ़ेगा. That is why we say that the first diagram gives you maximum normal reaction. Is this clear to all of you all? So since radius of track A
is least, तो उसका मतलब है जो fraction है that will be maximum greatest. सबकी mg तो सेम है, तो ये वैल्यू अगर सबसे ज्यादा यहाँ पे आया तो ज्यादा में से अगर एक कांस्टेंट वैल्यू निकालते जाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसका ज्यादा होगा. Therefore normal reaction force of A is maximum. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अरे Yes. हाँ यार, ने भगवान Yes. क्यों रुक जाओ. और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने फोर्सेस कैसे किए थे? एग्जैक्टली सेम सर. यहाँ पे mg नीचे की तरफ जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉडी इज गोइंग विद v, लेकिन वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो mg इज ग्रेटर देन है. And so this is simply when I explained you all, I'll explain you all very clearly about this convex and concave bridge. ये तो सिर्फ convex की problems आ रहे हैं, concave भी आ सकते हैं. Don't get confused that. और ये तुम्हारा example किसकी सबसे ज्यादा made it very clear. Motion of lift, laws of motion किए तुम लोग ने, Newton's laws of motion किए. A lift moving upwards, a lift moving downwards. Upper end weight कहाँ पे पड़ता है, upper end weight कहाँ पे कम लगता फील होता है, कहाँ पे weightlessness होता है, ये सब कुछ पढ़े हो. तो यहाँ पे तुम्हें confusion नहीं होनी चाहिए. वहां पर भी तुमने फोर्सेस लिए थे, यहाँ पर भी फोर्सेस लिए. इरेज कर दो स्टूडेंट्स. Yes, sir. ओके. पीओ कैन आई इरेज इट? Yes, sir. ओके फाइन. तो वापस चिल्लाओगे मेरे को और डरा दोगे. The next one, students. Anybody? Sir, in the question it is see the figure, but the figure is not given. Oh my God. The question is wrong, isn't it? Isn't it, PO? Yes, sir. Just the diagram is like not given. Okay. Is the question written in Urdu or No, sir. Malayalam or Telugu? That you're not able to understand the question. It's given in English now. So can't you Yes, draw your sir. diagram and try to trace it? हाँ, okay, sir. और उसके लिए डायग्राम की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए. पियो सच्ची, I need to tell your mom. Students, not necessarily need a diagram for the 6-1 students. You can draw the diagram by yourself. And everybody knows, students, friction supports motion. Friction holds the object also, students. That's why you can consider there are useful frictions, there are harmful frictions also, students. Learned it in friction after laws of motion. Yes, anyone? Can I solve it for you all, students? Okay, students, I'll give you the answer. An insect crawls up a hemispherical surface very slowly. Okay, coefficient of friction between the surface and the insect is 1/3. That means if you say it's a hemispherical surface, we are doing question number 6, students. So when I speak about the diagram, students, this becomes your hemispherical surface. Okay, think as if this is the center of the hemispherical surface, and there is an insect over here. Let's assume the insect is over here. The coefficient of friction, which causes the insect
Okay, to either move or keep in rest is 1/3. So coefficient of friction is 1/3 students. Of course, the value of mu should be always less than 1. If the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical. Suppose if I take this as the center and this is the vertical, students. The insect forms an angle alpha with the vertical, students, and this is the radius of the circular path. Okay, the insect is over here. The question asked is, the maximum possible value of alpha is, you need to find out alpha. Okay, so alpha for the insect to crawl. Okay, see one thing, अगर अगर friction कम होगा, students, if the surface is very smooth, the insect is going to slide down. Yes, Aryan, why are you late, Aryan? Sir, I rejoined, sir. Sir, my phone got dead, sir. Okay, fine. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, अगर सपोज फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, द इंसेक्ट विल अगेन स्लाइड, वो नीचे की तरफ आ जाएगा. तो who holds the insect? It's the coefficient of friction. I'm getting it, and it can move onto the surface against gravity as well as we consider. So now I need to get the maximum value of alpha so that the insect can hold himself onto the surface. Till what angle it can hold? कि जैसे जैसे तुम्हारा अल्फा बढ़ता जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट होना शुरू हो जाएगा. समझ में आ रहा है? A simple example, तुम एक स्लाइडर है, अगर एक स्लाइड करने वाला ऑब्जेक्ट है, अगर तुम जैसे जैसे ऊपर जाओगे लेकिन अगर स्टीपनेस बढ़ता है फिर तुम होल्ड नहीं करोगे तो तुम स्लाइड होके वापस नीचे आते हो. तो क्या एंगल ऑफ अल्फा तक वो होल्ड करेगा इंसेक्ट को? दैट्स अ क्वेश्चन आस्क्ड. So now when such kind of a diagram is given to you, one can easily get the value of alpha. How do you do? Sir ऐसा करते हैं ना, ये इंसेक्ट है ना, तो उसका फोर्सेस हम करते हैं, ये mg नीचे की तरफ आएगा. And then we will resolve the component, I guess. क्या बात है, इंटेलिजेंट स्टाफ. Who's this intelligent staff? Who answered this? Now Sir, see, now no. we- You तो बोलो, क्या करोगे? Sir, mg sin theta and mg नॉर्मल cos. रिएक्शन फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा या होगा? नहीं, normal reaction force. क्यों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? क्यों मतलब ऊपर normal reaction force, the side, both the side will resolve the component, no? That is the इंसेक्ट से सेंटर की तरफ नॉर्मल क्यों आता है? टेंशन भी आ सकता है ना, पेंडुलम के अंदर भी तो टेंशन आता है कि नहीं आता है? तो टेंशन लेते हो कि नहीं लेते हो? यहाँ पे टेंशन लोगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लोगे? यो Sir, I guess normal reaction force only. that is my question to you. Anybody can tell me? Because What it is not attached, I guess. मतलब टेंशन Yeah. कहाँ क्रिएट हो रहा है ना सर, नहीं हो रहा है क्रिएट. नहीं हो रहा, तो ये बोलना है कि insect is crawling on the surface. Insect is not held by a string to the center. हाँ, that only I said, it is not attached. So it is not connected to a string or a rope or a chain or a wire. That is why there is no tension. And since it's contact to the surface, therefore students ये होगा normal reaction force. Now ये तुम किसको resolve करोगे? N को या mg को? किसको और क्यों? Resolve किसको करोगे? N को करोगे या mg को करोगे? जल्दी, fast. No, see, now she stopped. Sir, mg. Yes, mg. इजहार n को कैसे करेगा तू? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कैसे करेगा? अभी भी बता रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कभी करना है स्टूडेंट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. प्लीज स्टूडेंट्स, ये हमेशा ध्यान में रखना, रेजोल्यूशन बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं. यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वेट होगा ना स्टूडेंट्स, इंसेक्ट का खुद का वेट है, जैसे जैसे अल्फा बढ़ता रहेगा स्टूडेंट, जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा, ग्रेविटी विल आल्सो एक्ट ऑन टू इट, तो इंसेक्ट बेचारा होल्ड नहीं कर सकेगा.
तो what maximum value of alpha it can hold himself onto the surface, ये क्वेश्चन पूछा है. अरे छोड़ो ना इनसेट को, एक बड़ा सा स्फेरिकल दिया है इजार, तेरे को इस स्फेरिकल के ऊपर ऐसा चलने के लिए बोला, चल स्लाइड करते हुए ऐसे ऊपर जाने के लिए बोला, तो तू कहाँ तक जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है. क्या अल्फा तक होगा, दैट इज व्हाट. व्हाट एग्जैक्टली विल गो फॉर, सर आई विल गो टू रिजॉल्व एमजी. तो एमजी को रिजॉल्व करेगा तो ये होगा तुम्हारा रेजोल्यूशन. ये अल्फा है तो कहने से दिस आल्सो विल बी अल्फा. गेटिंग इट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये हो जाएगा mg cos अल्फा और ये होगा mg sin अल्फा. व्हाट इज mg sin अल्फा? इज द रिस्टोरिंग फोर्स जो इनसेट को वापस नीचे की तरफ लेके आएगा. अगर सपोज बाय चांस फ्रिक्शन कम हो जाता है, अगर फ्रिक्शन कम हुआ या अल्फा की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो गई, तो कौन सा फोर्स उसको खींच के नीचे की तरफ लेके आएगा? mg sin अल्फा. Are you getting it, students? Yes, sir. So now can I say what exactly your answer for this will be? Force of static friction is Bs into N. Agreed? ये mg sin अल्फा इस तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? ये दोनों बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कहने से your mg sin alpha balances force of static friction. Your mg cos alpha balances the normal reaction force. mg and mg will get cancelled. So what exactly tan alpha will be equal to? Sir, mu. Force of static friction is equal to mu s into n upon n, and n will get cancel. And what is the value of mu? 1/3. Do you see any option showing tan alpha as 1/3? No. So what is the answer? Take reciprocal. What is 1 upon tan alpha? Cot alpha. Cot alpha is equal to 3. So which option shows me the answer? A. Option A. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी अगर ये इंसेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड होकर आता है रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि कौन सा फोर्स उसको होल्ड करके रखेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. उसका डायरेक्शन ऑपोजिट में होगा. GWS चैतन्य घानेकर. Who's this चैतन्य घानेकर? Students, do you all know who's Chaitanya Ganekar? Okay. So force of static friction balances mg sin alpha. Normal reaction force balances mg cos alpha, students. Taking the ratio, you'll get the answer. Is this clear, students? Can I Yes. erase it? Yes, It is. sir. Yes, sir. Sir, Yes. बोलो. अभी कौन बोला? Who's this? sir, these questions will come in NEET also. Yeah, why not? You, why you're crying? Huh? Sir, can't hear your voice. It was breaking. Students, the rest of you all, can you all hear me very clearly? Yes, sir. Now you are clear. No, don't say like that. Students, were you all able to hear me properly earlier? The rest of the students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Hmm. sir.
So PU, there's a problem at your end. हाँ sir. Okay. No, don't. You can see my network also. It's complete. It's Sir, fully. it was a bit of red. नहीं होता हाँ क्या बोल रहे हो Nothing, sir. नहीं बोलो what you saying it क्या था red So I was saying a bit of it was network band which was low, but now it is good. अच्छा my bandwidth network was low. I'm very sorry PO. I'll see to it that I'll increase the bandwidth. Okay. Next question, students. Come on, anyone. A simple pendulum is oscillating without damping when the displacement of the bob is less than the maximum. Its acceleration vector is correctly shown. That's a simple question, students. Okay. Yes, anybody? So it's given to you a simple pendulum is oscillating without damping. Without damping का मतलब क्या? That means it's going with constant amplitude for a given time period, students. If somebody asks you what exactly undamped oscillations, if I try to give you two diagrams, students, many students must have learned this in your chapter sound in your class 10th. Look at the two diagrams, students. अगर मैं यहाँ पे ये वाला diagram दिखाऊं, students. So what exactly this diagram speaks about? Motion is periodic, time taken is constant, but is it with constant amplitude? Yes. So these are called as undamped vibrations. But if I say motion is periodic, but amplitude goes on decreasing, what is that we call damped? So ये undamped oscillations or ये damped oscillations. Undamped oscillations का मतलब oscillations will go on. That means you're carrying on the experiment in vacuum. तो bob हमेशा move होता रहेगा. Let us say the bob is displaced at a certain angle with the vertical we consider is. Okay, उन्होंने पूछा है when displacement of the bob is less than maximum its acceleration A is correctly shown. Students, अगर ये bob का acceleration है तो ये simple pendulum है. Simple pendulum performs linear SHM, students. अगर ये angle छोटा है फिर भी I can consider what exactly it is. There are two acceleration. One acceleration I can consider will be equal to what acceleration centripetal. Other one we consider is tangential. The tangential force will cause it to make it to move back to its main position. तो देखो ना यहाँ पे एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होगा. इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? सर इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो पैरेलल. तो नाउ सी वेयर इज द रिजल्टेंट गोइंग? तो सिंपल बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, tail head tail of the first vector to the head of the second vector. Can I say this becomes your acceleration net? Friends, which diagram shows me a bob and the arrowhead? So this C1. is your answer. अभी इसमें मेरी हेल्प की जरूरत थी स्टूडेंट्स, ये सिखाया सर गया है. हाँ बोलो. सर अगर इसमें ऐसे देखे तो पहले बी में देखेंगे उसमें फोर्स रिस्टोरिंग लगेगा नीचे और किसमें? बी में हम्म. तो वो फोर्स रिस्टोरिंग की डायरेक्शन में होगा. जो और देखो ऑप्शन ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता रहा है. अरे ऑप्शन बी सर, आई कैन आप सुन तो कंसीडर. लो. हाँ हाँ और फिर सर ए का जो सी में डायरेक्शन दिया है उसको हम लोग उसका अपोजिट डायरेक्शन मान सकते हैं ना, मतलब मैग्नीट्यूड है इसका एफ रिस्टोरिंग का. नहीं भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये होगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगा ना, ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन होगा भाई. इसका तो ये डायरेक्शन होगा, ये थोड़ी होगा, ये डायरेक्शन होगा. सर वैसे नहीं, मतलब
नीचे की तरफ जा रहा है तो फोर्स रिस्टोरिंग से मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, बढ़ वही रहेगा, अनचेंज रहेगा। और ये यहाँ पे ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो कम होता रहेगा ना ऐसे। I didn't get you. My dear, it's going with constant amplitude. तो उसका मतलब मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन 0 है पार्टिकल का। जब भी वो एक्सट्रीम पे जाता है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा, यहाँ पे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी 0 होगा, फिर वापस नीचे आ रहा है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। इट कैन गो बियॉन्ड फर्दर क्योंकि यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन है, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन क्लोजेस्ट ओवर हियर विल बी रेडियल प्लस टैंजेंशियल, उसका नेट इस तरफ आएगा। So students, if you see the diagram, option A speaks about only centripetal, option B speaks about only tangential, that is restoring, option D speaks about weight, G, gravitational acceleration. तो तुम्हारा कौन सा एक्सेलरेशन होना चाहिए फॉर इट टू हैव, तो इट शुड बी द रिजल्टेंट ऑफ radial and tangential, so the option will be C. Is that clear? जी सर। और ये undamped oscillation, अगर किसी ने पूछा what exactly undamped oscillation are those simple harmonic motion of which are those periodic motion of a particle with constant amplitude, and these are periodic motion of a particle with decreasing amplitude is called damped oscillations. ये भी ध्यान में रखना। Next one. A sphere of mass m is tied to the end of a string of length L and rotated through another other along horizontal circular path with speed v. So is the work done in full horizontal circle is. Now this is an easiest one. Yes, friends, can you tell me? The body is set to move in a horizontal circle with speed v, students. The work done in full horizontal circle. What is the work done in full horizontal circle? 0. Students, क्यों इतना सोच रहे? I don't understand that. ये पूरा हॉरिजॉन्टल सर्कल है, v यहाँ पे आ रहा है, कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर तुम इसके हिसाब से लोगे तो व्हाट एग्जैक्टली वर्क डन वी कंसीडर इज वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो कहने से cos ऑफ 90 क्या हो जाएगा? 0। therefore work done is equal to 0. So work done by the force of centripetal is always 0 for a body moving on a circular path. अगर मैं वन कंप्लीट सर्कुलर पार्ट लेता भी हूँ तो हम ये भी कर सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। उन्होंने बोला वन कंप्लीट सर्कल तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि बॉडी अगर ए से शुरू होता है वापस ए पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन इज 0 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Next one. Motor car is moving at the speed of 30 meters per second on a circular path of radius 500 meters. Its speed is increasing at the rate of 2 meters per second square. Students, what will be the resultant acceleration? Come on, anybody? The most intelligent person in the class will be answering. Yes, so a motor car is going with a speed of 30 meters per second on a circular path of radius 500 meters. Its speed is increasing at the rate of 2 meters per second square.
what will be its resultant acceleration? Students, its speed is increasing at the rate of, so what is that given to you? 30 meter per second. No, speed is increasing at the rate of, so which physical quantity is that? Tangential acceleration. Acceleration. tangential. Very good, very good. It's dv by dt, students. Speed is increasing at the rate of 2 meter per second square. तो तुम्हें दिया क्या है? तुम्हें वो dv by dt दिया है. Students, acceleration tangential simply दे दिया तुम्हें. कितना दिया है? 2 meter per second square. देखो ना, यूनिट से पता चलता है वो acceleration ही है. dv by dt है. And the body is going with a speed of 30 on a circular with radius. So can I say acceleration centripetal मुझे मिल गया v square by r, है ना? Velocity कितना दिया है? 30. So can I say 30 square upon r कितना दिया है? 500. So can I get acceleration centripetal? Why not? Yes. So it's 900 upon 500. So it's 9 by 5. 1.8. Pardon? 1.8. 1.8. Yeah, so what exactly तुम्हें acceleration net पूछा है? क्या पूछा उन्होंने? What is the resultant acceleration? तो acceleration net क्या होगा? Under root acceleration centripetal the whole square plus acceleration tangential the whole square. क्या ये clear हुआ students? हाँ students? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो ये 1.8 the whole square होगा plus 2 square. इसको add करके get the answer. क्या आंसर आएगा तुम्हारा? 2.7. 18 square is 324 and 2 square is 4. 4 plus 3, 7. Root of 7. Root 4 is 2. Root 5 is 2.2. Root 6 is 2.4. Root 7 is 2.6. The answer will be closer to 2.6. 2.7 is the answer if you go for correct one. Option will be B. Is it clear, students? Yes, sir. Tenth one. Can you even answer the 10th one? A person with the mass capital M stands in contact against the wall of a cylindrical drum of radius r, rotating with an angular velocity omega. If the coefficient of friction between the wall and the man is mu, the minimum rotation speed of the cylinder, which enables a person to remain stuck to the wall in spite of the floor, is suddenly removed. Students, ये वाला क्वेश्चन किया है ना हम लोगों ने? हाँ हाँ, sir. हाँ, तो बताओ. Under root new RGS ऐसा कुछ. हाँ, don't turn the pages. Don't turn the pages. Naughty people, don't turn pages behind. Yes, anybody? Very good. Neha, can you answer? Very good. Neha is correct. नेहा बोलो. Yes, sir. हाँ, कैसे करोगे? क्या बताया था मैंने? ये नीचे का पेज है. I got it. And the person is inside. And it's at rest, standing. Now tell me,
Neha, can you tell me? The person should not fall. The floor is gone now. Okay, with what minimum angular velocity? Can you tell me, Neha? Neha, are you there? Yes, sir. Bolo. Can you tell me what are the forces acting? सब एनजी हाँ, mg नीचे की तरफ होगा. Agreed? Sir, Normal non-action. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ होगा. तो देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से तो इंसान इस तरफ आना चाहिए. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? Friction. फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है. No, sir, centripetal. Centrifugal. हाँ, सेंट्रीफ्यूगल व्हिच इज आल्सो सेंट्रीपिटल. तो देखो ट्राई टू थिंक, अगर सपोज एन आता है तो बॉडी अंदर की तरफ आएगा, लेकिन उसको दीवार की तरफ चिपका के कौन रखता है? क्वेश्चन इज आस्क्ड, द पर्सन शुड गेट स्टक टू द वॉल. तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? फोर्स सेंट्रीफ्यूगल व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू सेंट्रीपिटल. तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज एक्चुअली फोर्स सेंट्रीपिटल. तुम ले सकते हो क्योंकि ये भी सेम ही आ गया. अगर बाय चांस सपोज बंदे का वेट ज्यादा गिर जाता है तो ऊपर कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा. एग्रीड? हाँ सर. लेकिन अभी नाउ द पर्सन नॉट इवन फॉलिंग डाउन, नॉट इवन मूविंग अप, इट्स नॉट इवन गोइंग डाउन, नॉट इवन गोइंग अप. तो कैन आई से ये बैलेंसिंग फोर्सेस हो गए? है ना? Yes. So now can you get an answer? So force of static friction क्या होगा? M into G. And normal reaction force is equal to force of centripetal. And what is force of static friction? Mu s into N is equal to M into G. So instead of N, students can I write on mg by mu? And force of centripetal को m r omega square लिख सकता हूँ मैं, because I need to get angular velocity. हाँ students, n को mg by mu लिख दिया और force of centripetal को m r omega square. m gets cancelled. मुझे क्या चाहिए? ओमेगा चाहिए. What exactly omega will be equal to? Under root g by mu r. Is this clear? Yes, sir. Students, it was done. I don't know why exactly you are not able to trace it. Sir, Forces are balanced. हाँ बोलो. PU को अंदर ले लो. I got in. Thank you, Okay. Akash. ये क्या है? पीयू का क्या है? सबको क्या बोलती रह रही है यार? अंदर आने के बावजूद भी पीयू यार, ऐसे मत करो ना प्लीज यार. पीयू, Sir, I don't do it you do intentionally. like that, my dear, but people are so much for you, so much caring for you. कोई तो बेचारा लड़का बोला तो यू ऑलरेडी इन, माय डियर, ऐसा मत करो ना. Next one, students. Yes, can you give the answer to the next one? A coin placed on a rotating table just flips if it is placed at a distance 4r from the center. On doubling the angular velocity of the table, the coin will just flip. Okay, when a distance from the center equal to. Anybody? One minute. You, how many people you have told that you are not there into the lectures? A boy spoke to me. Khushali has texted me. What is so going on? You, why do you do like this?
You text from your mom's phone saying that you are Piyu's parent. This is not done, Piyu. See the way you're doing it. Kushali is also saying for you. A boy also said it. They said take Piyu inside when already you were in. You ऐसा मत करो. It was completely your fault. You. It's completely your fault. You say 10 people to speak for you. It's not good when you're already in. And if you're not in, then might be some reason is there, no? When you went out of the lecture, there was some reason for you to go out. So if you can't enter into the lecture, there might be reason at the other end also. Your reason is valid. Your reason is valid for going out. And the other person's reason is not valid for taking you in. ये कहाँ का है? This is not done, you know. I was explaining, my dear. मैं explain कर रहा था. I was in the explanation. Because I saw the text of Kushali also right now. Just now I saw the text of Kushali. Because at one time when I'm on the board, I can't see the screen. I don't see the chats, and the chats follow one below other. So the chats have been missed out. And the problem was going on. Okay, students, can you get the answer for the 11th one? A coin placed on a rotating table just slips if it is placed at a distance of 4r from the center. On doubling the angular velocity of the table, the coin will just slip when a distance from the center equal to. Anybody? Students, they've given to you. That is, see one thing, students, these are all easy questions. I don't know why you all are struggling in these things. A coin is placed on a rotating table and it just slips. Now, suppose if I give you a coin, this is the center of it, and this is a rotating table, students. They have given to you that the coin is placed onto it at a distance of 4r. Suppose if I say the distance is 4r in the first case, am I getting it? From the center. So what exactly the formula for force centripetal acting onto this particular coin? The center, and the path is circular, students. If I say it's a circular path, then what exactly the formula for force centripetal? It's m r omega square. That's how we consider. So we got the answer for the first one. Now what they're saying it is that from the center, on doubling the angular velocity of the table, the coin will just slip when a distance from the center equals. So now you need to find out what on doubling the angular velocity, students. Keeping the centripetal force remaining constant. What is the centripetal force is always directed from the particle towards the center. यानी दोनों केस में मुझे क्या करना है, फोर्स सेंटीमीटर को इक्वेट करना है. तो पहले केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, m रेडियस 4r है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर है. सेकंड केस में उन्होंने क्या किया है, एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दिया. स्टूडेंट्स द स्पीड इज इंक्रीज, रीड वेरी केयरफुली. On doubling the angular velocity of the table, the coin will just slip when the distance is how much. तुम्हें रेडियस पूछा है, तो m तो भाई r नहीं पता, और ये 2 ओमेगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा. m gets cancelled. Now can you get an answer, students? Yes. 4r omega square is equal to r into 4 omega square. I need to find out r. Can I say 4 gets cancelled, omega square gets cancelled? What is the radius in the second case? Equal to the first one. So what's the value of r? Smaller. Students, is this clear to all of you? Yes. The formula for force centripetal. The answer is centripetal force के 3 formulas है ना students. Everybody should know this part. Centripetal के 3 formulas है. It's mr omega square, m into v into omega, and mv square by r. ये 3 formulas है.
तो कौन सा फॉर्मूला मैं पिकअप करूंगा इन ऑर्डर टू गेट द आंसर, बिकॉज द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द ओमेगा स्टूडेंट्स and there was no velocity given to you, so my choice of question will be this, ये वाला होगा। और बहुत ही क्लियरली दिया है कि पहले केस में रेडियस 4 टाइम्स है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सेकंड केस में उन्होंने रेडियस पूछा है। रीड इंग्लिश दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, व्हेन यू रीडिंग एमसीक्यूज रीड इट वेरी प्रॉपर्ली। तो तुम्हें आर पूछा और एंगुलर वेलोसिटी को डबल्ड कर दिया। व्हाट इज द आंसर? सी। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Can you answer the next one? Students, given to you a mass of 2 kilograms is held in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 5 revolutions per minute. Now read it very carefully. Keeping the radius constant, the tension the string is doubled. The new speed is nearly. Come on now, it's an easy question, students. Please, your second and 11th and 12th are easy questions. Now these are thoda sa easy ones, students. You should be able to trace it. Yes, anyone for the 12th one? Sir, doing Yes, Neha, I'm able to hear you, but at the same time, your voice gets stopped then. Okay, Neha is solving. Shall I solve it for you all, students? Neha, shall I solve? No sir, मेरा भी हो रहा है। Okay, fine. सर इसका आंसर √50 होगा, which is approximately 7. Very good. 7 RPM. Absolutely correct. Yes, Akash. Can you tell me how to go about? सर वो आपने एक फॉर्मूला दिया था ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो इधर Yes. हमको ये इज इक्वल टू क्या कहते हैं, Okay. मैं So पहले ये लूंगा mr ओमेगा स्क्वायर absolutely, सेंटीमीटर, absolutely, तो absolutely. फिर उसमें ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, जो लाइक फिर उसमें फ्रीक्वेंसी डाल दूंगा एंड देन उसको मैं Yes. डिवाइड करूंगा विद सेकंड केस जो है 2t इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। Students, absolutely correct. देखो, the way he thought 11th and 12th are almost identical. वहाँ पे मैंने equate किया. यहाँ पे आप ये तुम equate भी कर सकते हो, तुम ratio भी ले सकते हो. So what exactly the question is given to students? A mass of 2 kilograms is held in a horizontal circle by means of a string. ये एक ऑब्जेक्ट दिया है स्टूडेंट जिसका 2 kilograms है and it is made to move in a horizontal plane with the help of a string. स्टूडेंट्स ये सेंटर है। अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है in a horizontal plane, students, it's in a horizontal plane, so in that case which force is always directed from the mass towards the center? Tension. स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं सस्पेंड करता हूँ freely and if I'm holding it from here and the object is suspended freely, तो can I say weight is acting in the downward direction? और ये अगर मैं स्ट्रिंग लेता हूँ तो टेंशन ऊपर की तरफ होगा। अब यही ऑब्जेक्ट को मैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ, look at my hand. So can you tell me that tension actually accounts for the centripetal force? Yes. Now when you read it over here, they've given to you what? 5 revolutions per minute. Since 5 revolutions per minute is actually frequency दिया है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा फोर्स सेंटीमीटर का? जस्ट नाउ आई गिव 3 फॉर्मूलाज, उसमें से कौन सा फॉर्मूला तुम यूज करोगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर I'm going to use. Now there are two cases what he's saying it. Akash said about 2 cases. A mass of 2 kilograms is held in a horizontal cycle by making a string
at an initial speed. So what exactly initial speed we consider is? Okay. Keeping the radius constant, yes. So what exactly tension in the first case is T, M, R. What is omega? Omega is 2 pi F. Now, when you look at the answers, students, are all answers are given in terms of RPM? Yes. तो तुम इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट, इसको तुम चेंज नहीं करोगे क्योंकि सारे ऑप्शंस में आरपीएम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। So now in this case, can I say it's m r omega square? Can I say this becomes 2 pi f the whole square? So tension is equal to m r 4 pi square f square. This is my equation number 1. ये मेरा frequency the first case है। Now उन्होंने क्या पूछा है? Keeping the radius constant, the tension of the string is doubled. If I double the tension in the second case, keeping radius constant, mass of the body remains the same. पूछा क्या है? The new speed यानी frequency पूछा second case में। So कहने से यहाँ पे भी मेरा 4 pi f square, तो ये पूछा गया। Now can I take the ratio students? Divide 2 by 1. तो देखो 2t is equal to m r 4 pi square f square upon t upon m r 4 pi square. ये frequency कौन सा है? 5. Agreed. Now can I get an answer students? So see, t will get cancelled, m will get cancelled, r is getting cancelled, 4 getting cancelled, pi square is getting cancelled. I'm getting it. So what is 5 square? 25. 25 to 2 is how much? 50. So what is frequency? The second square is 50. So what is f? Root of 50. And friends, what is root of 50? Root of 49 is 7. Students, the root of 50 is just greater than 7. So nearly equal to 7. Which option shows me 7 RPM? Option is D. So is that clear to all of you all? Students, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I erase it? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, excused. Sir, we can use another method also, right? Which one? So for T, we used m omega square r, right? So we can use it as mv square by r. लेकिन v को तुम कैसे, ये फ्रीक्वेंसी f दिया माय डियर, तो v हाँ फिर आगे बोलो, आगे बोलो। So then we'll divide both the equations and then I am getting the answer as 7.07. नो नो, लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया है ना तुम्हें, v कहाँ दिया है? तुम्हें फ्रीक्वेंसी दिया है ना। तुम्हारा फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तुम mv स्क्वायर पर r से कर रहे होते, आया ना? Yes, sir. मुझे यहाँ पे बताओ, ये जो 5 RPM दिया है, तो ये 5 RPM है क्या तुम्हारे हिसाब से? What is 5 RPM? What is this? 5 RPM का मतलब क्या है? Revolutions per minute. Yes, sir. तो वो है क्या? क्या वेलोसिटी है वो? वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, आया ना? मास किलोग्राम में होगा, रेडियस मीटर में होता है। कहाँ पे आरपीएम कहाँ पे भी आता है यहाँ पे फॉर्मूला में? No, sir. तभी जाके एम आर ओमेगा स्क्वायर सिलेक्ट किया, क्योंकि ओमेगा क्या है? यूसीएम अगर हम लेते हैं तो या तो तुम 2 पाई बाई टी लिखो, वही आकाश ने बोला, या 2 पाई एफ। आकाश यू ओनली आंसर ना? यस सर। हाँ, तो आकाश ने तभी बोल दिया था कि ओमेगा को हम 2 पाई एफ लेंगे, क्योंकि अभी ये फ्रीक्वेंसी हो गया स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। और ये सब तुम 10th में पढ़ चुके हो साउंड में, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कितना दिया है? ध्यान से देखो, ये फ्रीक्वेंसी दिया है,
ये है 5 revolutions per minute, यानी 5 अपॉन अगर मैं 60 ले लूँ ना तो ये होगा revolutions per second. उसका मतलब 5 अपॉन 60 Hz hertz. ये है frequency. ये है angular velocity. I'll consider of a body revolving or rotating. और ये frequency, number of rotations. पंखा जब भी घूमता है तो 1 मिनट में कितने revolutions लिए? 5 revolutions. उसका मतलब ये है. नेहा, is it clear? Yes, sir. तो अभी तुम ये फॉर्मूला लोगे या ये फॉर्मूला लोगे? MR omega square. ओके, तो ये ध्यान में रखना, और ओमेगा को 2πf या 2π/t ले. ओके, Yes, sir. okay, next one, 13th one. A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. Anyone? Come on fast. A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity. Students, force is perpendicular to the velocity. What kind of motion the particle is going to have? CM. It's circular motion. A particle is acted upon by a force of constant magnitude. कौन सा force? And it's always perpendicular to velocity. तो centripetal force होगा कि नहीं होगा? हाँ? Izar, हाँ सर. force and velocity mutually perpendicular. Students, what is happening? कर क्या रहे हो तुम लोग? अगर F और V परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे भी तुम्हारा F इस तरफ आएगा, V इस तरफ जाएगा, यहाँ पे भी तुम्हारा F इस तरफ आ रहा है, V इस तरफ जा रहा है. सब कुछ सिखा चुका हूँ, फिर भी पता नहीं what exactly you are trying to think. So what exactly the path is going to be circular. हम लोग ने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया ना, काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग कांस्टेंट. सब बोला तो हाँ. नहीं, मैंने सुना नहीं सर. I didn't hear it. Maybe you were too soft with speaking. Okay, सर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी, बिकॉज़ सी व्हेन आई से फोर्स इज कांस्टेंट, तो फोर्स के भी कितने फॉर्मूलाज हो गए? mr ओमेगा स्क्वायर. फिर अगर फोर्स कांस्टेंट है, मास तो सेम ही रहने वाला है, रेडियस भी सेम है, तो ओमेगा आल्सो रिमेंस कांस्टेंट. इफ ओमेगा रिमेंस कांस्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज यू सी? एग्रीड? So what Yes, about sir. the kinetic energy? Kinetic energy remains constant. Agreed? The option for 13 will be C. Yes, sir. Next one. Yes, can you give me answer the next one? 41, Akash? Yes, bolo. Sir, in 13th question, kinetic energy is constant because mass and velocity are constant, right? Absolutely correct. Sir, then in velocity- option 8 is given its velocity is constant. Then why it is not the answer? नेहा my dear, kinetic energy मुझे बताओ, स्केलर है या वेक्टर है? नेहा, kinetic energy क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? So vector. ए नेहा, kinetic energy is a scalar quantity. एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सारे स्केलर है. Yes, sir. तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो वहां पे v को तुम क्या बोलोगे? वेलोसिटी बोलोगे या स्पीड बोलोगे? Speed. तो ये मैंने बताया था पहले भी, वहां पे जब इस क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो वाला वैसे ही किया था. तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गोस ऑन चेंजिंग. Yes, sir. Got it. Sorry, sir. ये बेसिक्स बता चुका हूं मैं, तभी जाके मोशन इज एक्सेलरेटेड. स्टूडेंट्स यार, फाइन, इट्स फाइन दैट यू आस्क्ड अगेन, लेकिन ये बेसिक्स मत भूलो. जब ये सर्कुलर मोशन मैंने सिखाया था तो क्लियरली मैंने बोला था स्टूडेंट्स,
Direction of velocity all the time is perpendicular to the position vector. मैंने v dot r को 0 प्रूव किया था. Motion is circular. अगर UCM होता है तो magnitude of velocity, that is speed remains constant. Okay, 14th. And Pio, you texted, my mom is listening all this. So what if it's listening? I have no problems. I'm happy all the parents should listen. What am I saying? I'm happy. Supported me so much saying that this is what you're doing in class now. You're not behaving properly and all. She was scolding. I was unable to hear the lecture also properly. So I said, Mama, this sir, My dear, I didn't, because I was explaining over there and my concentration was over here. I didn't see the text also. The boy said it, and then Kushali ka maine text dekha. During that time, like two people are saying it in that case. Sir, because I first tested Khushali, so I thought that question mera miss ho raha, so Khushali was like she was not reading, so I then messaged Akash. So My dear, first of all, you all know it. All of you all know it, students. I'm not taking it on a computer. Fair enough. Okay, I'm taking on a whiteboard because I feel so that people prefer to go for a whiteboard and a chalk. The pattern of the schools or colleges has to be. I don't know about it, whether you're comfortable with computer types of it or this type of it. I don't know about that. But I feel so this is more feasible with respect to working with the students to get it more clear. It's only that I'm not showing my face quite often. But since that feels that you are still close to the teacher and the teacher is actually present in front of you when it's actually on the board. And when I'm teaching, my vision is over here. And when somebody is taking on a PC, the notepad is writing it. So the screen and the notepad is opposite to each other. उनका vision हमेशा screen के ऊपर रहता है. मेरा यहाँ पे जब यहाँ पे रहता तो I'm looking at the board. yes, sir. I understood. हमेशा देखो तो sometimes scrolls of the messages also goes ahead. So in that some student also answers और उसका आंसर पीछे चला जाता है और फिर मैं उसको वापस पूछता हूँ बेचारे को कि यार आंसर दे. तो आप बोला सर मैंने टेक्स्ट तो किया था. It's like that. Okay. चलो now get an answer, students. Yes. Anyone? 14th one. A car is moving on a circular level coverage of 300 meters with a coefficient of friction is 0.3 and acceleration of gravity is 10. Come on, this is a simple one. Sir, if we equate like centripetal force by frictional force. So you should know the formula. What's the formula? Sir, so mv square upon r is equals to nu of mg. So then if we transfer v square, sorry, if we transfer v, so it will be under root of nu. So this is the formula which I derived it here. The maximum velocity for a car on a circular students unbanked road is 100 nu/g और ये तुम्हारा formula है. Agreed? So car is moving on a circular level road of curvature. Radius कितना दिया students? 300. This is given to you. Okay. Gravitational acceleration कितना दिया? 10. Am I getting it? And friction is 0.3. And within the root sign. Now see, you solve, you'll get the answer. Students, ये कौन सा formula था मालूम है? On an unbanked road, when mu is considered, what is the safest velocity? अगर suppose the question safe के लिए होता तो less than Vmax. Topple होगा, गाड़ी अगर topple होती है तो इस velocity will be greater than Vmax. Students को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और ऊपर से ये भी बोला था कि जब भी गाड़ी सर्कुलर मोशन में जा रही है तो अंदर के व्हील्स को कम रिएक्शन, ये भी एक एमसीक्यू है. यही क्वेश्चन को मैं चेंज करके बोलता हूँ. A car is going on a circular unbanked road. Now, if the velocity is greater than Vmax, then which tires will experience less reaction, inner or outer? So तुम्हारा आंसर होना चाहिए inner tire, because the car goes toppling on the outer side. So now using this formula, what's the answer for Vmax? Wouldn't it be getting it as? Sir, 30 km/h. 30 meter per second. 30 meter per second होगा. Hello, ये meter. Sir, I am getting No, 108 option kilometer per hour. ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर में है. सर वो ये हम लोग हाँ, 18 sir, by I 5 से कर लेंगे ना converted. मल्टीप्लाई तो हाँ, नया 30 मीटर पर सेकेंड है लेकिन ऑप्शन दे किलोमीटर पर आवर में दिया है. I didn't saw the units. 18/5. Agreed?
ये किलोमीटर पर आवर में आएगा आंसर। देखा निया, तुमने एक आंसर गलत दिया, कैसे पांच हो गए सारे, है ना? Yes, sir. यही, अरे इट्स गुड, इट्स लेकिन फाइन, किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन इज सी। और सबसे ज्यादा कौन पाउंस हुआ? ओके, नेक्स्ट वन। If a car moves around a circular road of radius r at a constant speed, students, then what happens? One fast, 15th one. Sir, I guess there will be no force because constant speed is there. Oh my God, in heaven above, either feel with the love with the children, pray to amen. If there is no force, then the particle will not perform circular motion at all. Students, whether body is UCM or non-UCM, centripetal force will be always there. Centripetal क्या सिखाया है? पूरा circular motion की बैंड बजा दिया, ऐसा मत करो। For a particle performing circular motion, whether it's UCM or non-UCM, students, there is UCM के लिए only one acceleration radial, one force radial. If it's non-UCM, there are two acceleration, radial, tangential, one force radial and one force tangential. यहाँ पे speed constant है, तो यहाँ पे एक force ही होगा। Force होगा, क्यों नहीं होगा? इसने बोला force नहीं है। Without force, the गाड़ी will not move only. The car will not move only. And that force is provided by the friction. Without that, the car is not going to move. So students, the answer will be the force in the car is towards the center and its magnitude is mv square by r. The option number 15 is C. Students, A wala, its velocity changes, वो correct है. Speed constant है, direction of velocity goes on changing. लेकिन पीछे का part गलत है क्योंकि acceleration का formula v square by r होगा. Students, acceleration का formula v square by r होगा. वहां पे उन्होंने देखो ऑप्शन ए में क्या दिया, v by r square दिया है, तभी जाके वो ऑप्शन ए गलत जा रहा है. Are you getting it? Acceleration centripetal, क्योंकि वहां पे centripetal acceleration और centripetal force ही है, तो v square by r है उसका फॉर्मूला. Are you getting it? तो वहां पे दिखा है v by r square. That's why it's wrong. अगर सपोज वहां पे लिखा होता acceleration is v square by r, तो वो भी ऑप्शन सही होता. लेकिन now your correct answer for 15th is only C. 16th one. 16th one, students. Anybody? A small mass of 0.2 kilogram is whirled around in a horizontal circle at the end of a string of length 0.5 meter at a constant angular speed of 4. The tension in the string is, come on, Neha. Come on, Neha, answer for this. Tension in the string is fast. Anybody? So what is this going on? Tension in the string is equal to mr omega square. Simple centripetal force. Sir, 1.6. मास दिया है, रेडियस दिया है और एंगुलर वेलोसिटी का दिया 4 स्क्वायर 16. ऑप्शन इज बी 1.6. नेक्स्ट. हाँ, कर रहे हैं क्या बोल रहे हो? सर, मैं बोल रहा हूँ कर रहे हैं. अच्छा, कर रहे हो. कौन सा 16 कर रहे हो 17? 16. 16 तो फॉर्मूला हो गया ना mr ओमेगा स्क्वायर. हाँ. अच्छा,
Yes, students, are you getting the answer? Seventeenth वाला मिला students. When a girl rides around a corner on a bicycle at a steady speed, what happens? What is the reason for her to move on a steady speed? Which force is provided for her to move circular motion? तो कौन सा force चाहिए students? Centripetal चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो कौन provide करेगा? Friction. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. For 17th is C. Is that clear? Fine, students. So we complete up till here. Next lecture, students, is hardly now a few more questions are left. Students here hardly even another 15-20 minutes will be completing it. But next lecture, students will be going with system of particles. Okay. Yes, So sir. please ensure that you try Okay, to sir. learn all the formulas of circular motion also properly. Okay, students. Chalo, bye. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day. Bye, sir.